Assalamu alaikum, Mahwish. Walaikum assalam. Thank you so much for joining me for this podcast. मैं और Mahwish जो हैं, we go a long way. तकरीबन it's been more than around 8 to 9 years. Mahwish से मेरी पहली मुलाकात हुई थी when I wanted to learn a little bit about the Quran. तो वहाँ पे Mahwish मेरी टीचर थी and Mahwish की स्टूडेंट मेरी टीचर थी rather. So Mahwish बहुत सीनियर है नहीं है Mahwish? एंड उसके बाद हमारा बहुत एक लंबी जर्नी इडोपिया के साथ रही है वेयर ऑफ एंड ऑन करिकुलम डेवलपमेंट में डिफरेंट मैटर्स पे माविश एंड आई हैव बीन वर्किंग टुगेदर सो इन शॉर्ट वी both of us are education nerds and we wanted to talk about some of the more subtle things about education, the complexities of education, and we thought कि शायद हमारी इस डिस्कशन से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए. So that is why we want to start a series of sort जहाँ पे हम थोड़े से more complex aspects of education पे बात करें. How are you feeling about this, Mahwish? Alhamdulillah, I'm feeling good about it. You rarely get to have these conversations and very rarely on the record. Normally, things are kept very technical and policy related and statistics. So it's refreshing. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि मुझे लगता है कि ना जब भी इडोपिया के बारे में बात करते हैं स्कूल्स के बारे में तो बिल्कुल एक सरफेस लेवल पे जी ये सर्विसेज हैं ये फैसिलिटीज़ हैं ऐसे हम कर रहे हैं लेकिन जो असल में ऑन ग्राउंड थॉट यू पुट इनटू दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम एवरी डे वो बड़ी वो नर्व रैकिंग होती है जैसे है ना कि हमारी ओवर लंच भी डिस्कशन हो रही थी कि एक नया स्कूल जब भी आप बनाते हो तो दैट आई डोंट नो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन दैट एस्पेक्ट वो जो आप कह रही थी कि नया होके भी वो नया नहीं होता व्हाट वाज दैट Yeah, so that interestingly, I had a project in which I was supposed to observe a school, and I chose Edopia to observe. So, मेरी बहुत outside observation thi. Like I tried to position myself as somebody who doesn't, know the inner workings. And I thought about it, and it felt like your school is purely experimental, right? सो नया हो के भी नए नहीं होने के मॉडल्स जो हम देखते हैं यहाँ पर वो ये है कि पीपल कम अप विद अ न्यू स्कूल but there's an old person who's the principal and that signifies like पावर एंड this अथॉरिटी yeah but that also signifies orthodoxy, हम्म right? So there's this thing called doxa kehte hain jisko हम्म that runs supreme. So, what's the space for experiment? Just a new name, just a new campus, just a new team. That's the nature of experiment, or is there something else? So I felt like this school, this space that you created from back in the day was essentially experimental, And what I liked about it was that was made very obvious. कि ये तो ऐसा ही है. We are trying to do this. Let's see how it goes. There were no कोई फसाद नहीं था. So that's what I mean. But yeah. Yeah, I think our honesty is what kind of helped all the people come together and be a part of this process. And I think what other people also need to know is कि मैं और माविश अब जो connect कर रहे हैं in matters of education तो वो ये कि both of us have like I recently pursued a degree in education, so there's like a lot of theoretical understanding. I don't know, at the back of my mind, I'm carrying a lot of load of it that I Sure. feel like it's something that I need to delve into more often. And Mavish is currently pursuing a degree in education. So that is something जो कि हम दोनों को unite भी करता है over these topics. So आज की इस discussion के लिए the topic that we chose was life-worthy learning. And this term has been coined by David Perkins of the Harvard University. And I think it's a very good starting point because हम बहुत और जगहों से भी स्टार्ट कर सकते हैं कौन सा सिलेबस लगाना है कौन सी किताबें रखनी है क्या नहीं रखना बट बहुत एक बार बार जो नोशन वहाँ पे भी जब मैं पढ़ी थी तो आता रहता था एंड आई थिंक एनी वन हु वांट्स टू बी इन्वॉल्व विद एजुकेशन उनको ये थॉट आती है कि क्यों पढ़ाना है क्या करना है मतलब टू व्हाट एंड आर वी डूइंग इट एक होता है ना कि अभी जितना भी पॉलिसी वर्क है that is really really focused on how do we do it better, but now a more important question that perhaps people need to think about it, why do we need to do it, how तो होता जाएगा वही किताबें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दें और
टीचर ट्रेनिंग्स करा दें एंड सब कुछ और फैंसी चीज़ें ले आए, बट क्यों करानी है अब, इज़ द बिगर क्वेश्चन. सो लाइफ वर्दी लर्निंग ये है कि ज़िंदगी में जिस पढ़ाई का फ़ायदा होना है या जिस सिखाई का फ़ायदा होना है वो क्या है. एंड हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं कि स्कूल्स को या गवर्नमेंट्स को या ओवरऑल पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ये जो तकरीबन 16 साल बच्चा स्कूल में लगाता है, तो वहाँ पे जो पढ़ रहा होता है उसको किस तरह रिफ्लेक्ट, उस पे क्या मतलब व्हाट मोर नीड्स टू बी डन अबाउट दैट. सो लेट्स जस्ट गो बैक अ फ्यू स्टेप्स एंड Yes. अगर आप थोड़ा उस पे भी इफ यू हैव सम इनसाइट्स ऑन दिस टॉपिक कि हिस्टोरिकली लोग क्यों पढ़ते थे, क्यों सीखते थे, दीन में इसका क्या अगर कोई आपके पास रेफरेंस है, और इफ यू कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट व्हाई डिड पीपल लर्न बिफोर फॉर्मल स्कूल started. लर्निंग जैसे अब ये बात है कि ये हम लोगों के क्यूरियस, वी आर जस्ट काइंड ऑफ नेविगेटिंग दिस सब्जेक्ट, राइट? सो देयर शुड बी, आई want to start with this, that there should be no pretension of being an authority on something. I really like there is this series of books that's being written by Prince Ghazi, and there's one series in which he says this is a guide, and there's another series in which he says this is a tentative guide. And I felt like, okay, that really resonates with someone like me, but that might reduce the number of buyers the book has कि ये guide भी tentative है तो फिर क्यों खरीदें हम. So I tried to see कि क्यों कह रहे हैं वो ये tentative guide क्यों है, because he said that I don't mean to give you the word, it's a word. ठीक है, मैं आपसे कुछ शेयर कर लेता हूँ जो मैंने सीखा है, हो सकता है आपको फ़ायदा हो, बट दिस इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इट. सो आई थिंक कि ये हम सबके अंदर ज़रूरी है ये चीज़, कि अपनी सोचों के बारे में भी, अपने व्यूज़ के बारे में भी, टू रिमेंबर दैट this is what I feel, that's about all. So in terms of learning, I feel it's a very natural response. You're just curious. People are curious, and that's across the board. छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के, अमीर, गरीब, privilege, underprivileged, बीमार, सेहतमंद, हर इंसान curious ज़रूर होता है. So I think that's the impetus, वहाँ से कहीं से आता है, curiosity होती है, and you want to satisfy that curiosity. So that's, for me, that's the basis of, that's why I learned anything that I learned, to be honest. I personally am not somebody who is, मैं motivation पे इतना नहीं चलती, मैं curiosity पे ज़्यादा चलती हूँ. ठीक है. So like I'm trying to do something, I'm curious about something, I'll do it. Yeah. So I think learning वहाँ से आती है. That's for me. Yeah. एंड एक जो जनरल नोशन है ना कि हिस्टोरिकली इंसान ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी ही लर्न किया, एज पर नीड लर्न किया. पीपल वर नॉट हिस्टोरिकली सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ लर्निंग व्हेन दे डिडंट नीड इट, राइट? एंड एक तो ये एस्पेक्ट था. तो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि एंसेस्टर्स को जो चीज़ लगी यूजफुल उन्होंने पास ऑन की टू देयर चिल्ड्रन. एंड the second thing that really helped was the need at that time, जिसकी वजह से learning आई. And do you feel कि religion के अंदर भी जो learning आई, does that follow the same patterns, या वहाँ पे कुछ और aspect है learning के बारे में that needs to be talked about? That's very interesting what you have mentioned about needs. That's a very interesting way of looking at learning based on needs, because then that means that your needs are always evolving. Then your learning should be evolving, right? You should not be meeting the needs that you no longer have. ये बड़ा interesting बात है आपने mention किया. I'm sure we will come to it in a later part of this discussion. Historically, religiously, Islamic learning के एतबार से अगर आप देखें तो लर्निंग को अगर बहुत ब्रॉड स्ट्रोक्स में आप आइडेंटिफाई करते हैं तो देयर इज़ यूज़फुल लर्निंग एंड देयर इज़ नॉट यूज़फुल लर्निंग. इल्मुन नाफ़े है और दैट्स इट, राइट? इल्मुन गैर नाफ़े आप कह लें इसको, राइट? So what you pray for, what you are supposed to aspire for is something which is beneficial. Now, how would you say कि ये नाफ़े है, इसका नफ़ा है या फ़ायदा है? What's benefit, right? That's kind of left open. ठीक है, उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत आपको गाइडलाइन मिलेगी, बट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बस दीन का इल्म है, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट अटैच्ड टू परस्यूइंग इल्मुन नाफे, राइट? Now that could be like you're saying,
की नीड है, आपकी कम्युनिटी की कोई नीड है, एंड यू इन्वेस्टेड योरसेल्फ इन दैट, दैट्स इल्म नाफे, राइट? इसी तरह कोई रिलीजियस तो डेफिनेटली उसमें तो बहुत सारी एरियाज आ जाते हैं. सो डेफिनेटली इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर लर्निंग का कॉन्सेप्ट हैज़ टू डू विद नीड्स फॉर श्योर. नाउ आई एम जस्ट क्यूरियस कि जैसे हम लोग बच्चों के साथ बात करते हैं ना, एंड व्हेन दे आर लूजिंग मोटिवेशन टू लर्न, तो बहुत बार यही बात, मैम ये यूज़ कहाँ करना है? क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? मतलब ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली, मैंने डी से प्रोट्रैक्टर से सर्कल वो एंगल्स मेजरमेंट करने आ गए, ठीक है, वेरी अमेजिंग. मैं कंपास से सर्कल अच्छा बना लेता हूँ. Yeah, I'm just talking about math के areas, but even in sciences there are some very complex areas जो कि बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं और बस कहा जाता है कि ये ना आगे जाके आपको पता लगेगा इसका क्या फ़ायदा है. बिट्स एंड पार्ट्स में डेविड पर्किंस कॉल्स दिस काइंड ऑफ लर्निंग एटॉमिक लर्निंग, कि आपको बस कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली वैसे मैथ्स के सेंस में ही बात होती है, बट एट टाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भी, साइंस की भी कुछ चीज़ों में भी आ रही होती है, कभी आर्ट्स में भी आ रही थी, कि आपको आगे जाके पता चलेगा इसका क्या फ़ायदा है, अभी बस पढ़ लो. एंड प्लेइंग द होल गेम वाला कॉन्सेप्ट कम ही है हमारे. इट्स वेरी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स के ये डेफिनेशंस याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट्स याद कर लो, एंड आगे जाके देख लो क्या होगा. Which is why children kind of lose motivation as well, कि भाई अभी नहीं समझ आ रहा है, इससे मुझे इवेंट. और बहुत लोग इवेंचुअली बड़े होके भी कहते हैं कि आज तक यूज़ नहीं किया ये सीखा था, अलजेब्रिक इक्वेशन सीखी थी, आज तक यूज़ ही नहीं की, ठीक है, ज़िंदगी में एज एन एडल्ट. क्या रिलीजन में भी इस तरह है कि कोई चीज़ें बस एटॉमिक लेवल पे बताई जा रही हैं और कहीं पर होता है कि आगे जाके आपको इससे कभी फ़ायदा होगा? असल में आई वोंट कीप इट प्योरली रिलीजियस again because these things are so intertwined, my own experience. So this is I would like to introduce one thing here in our discussion, and that is the concept of positionality. Like, how do you position yourself? And that's something I recently learned, and I'm still learning about it, that you should make your positionality clear from the get-go, right? So if I position myself here across you sitting as a religious scholar, then that's my positionality in this discussion, right? But if I'm coming from a background of, like, just a person who's curious, thoda ye sikha, thoda wo sikha, then that's my positionality. So I will take it to that, like, very non-technical. So let me intervene and tell you why I'm taking the religion lens over here as well. Because for me, especially as a Muslim who's quite unapologetic about her identity as a Muslim, that for me becomes a worldview, right? And for me, it's the truth. So मैं तो इस सेंस में देख रही हूँ कि religion is very close to fitra then. It's nature, So अगर religion में कुछ prescribed है, तो it is going to be very close to the human design as well. So that's why I'm trying to get at that, कि क्या ह्यूमन डिज़ाइन को सामने रखते हुए जो लर्निंग का तरीका प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर इस तरह एटॉमिकली चीज़ों को डिवाइड करने की कोई गाइडलाइंस हैं, या इज़ इट प्राइमरीली learning is for the sake of benefit? You get what I'm getting at? So I'm not like really looking at the sectarian level पे या religious level पे क्या है. I'm just trying to get it to that point कि फितरा के level पे what's the guideline for humans? कि how should they be learning? It's interesting if you think about it like that. I'm not sure if this will directly answer what you're particularly looking for, कि elements का concept क्या है religion में. But there was one thing that I found resonates so much in Islamic learning, which is also being discussed in, learning thinking, good thinking, and that is this concept of problem solving. Okay, problem solving may, I'm sure you're aware of it. Jo George Polia or someone by that name, I think. So mathematics के उन्होंने problem solving के 4-step process बनाया था, right? David Perkins also talks about it. And I couldn't help but look at it, what the 4-step process that he had, and I felt like it's essentially largely like आप कान को ऐसे पकड़ ले, आप कान को ऐसे पकड़ ले, or you just don't like your ear, so you're holding it like you don't want anybody to see.
लेकिन हमारा मज़हब दीन हमें ये एक्चुअली एक्सरसाइजेस कराता है, ये मेंटल हैबिट्स हैं जो ये रिलीजन में हमारे हैं. सो 4 स्टेप प्रोसेस में जो एक चीज़ जिसकी मैं आपसे इस विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन अबाउट एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिट, राइट? So use of explicit strategies. So he says that if you are explicit about a process, then problem solving improves dramatically. ठीक है. ठीक है? From the get go, हाँ, from the हाँ, start. If हाँ. you're explicit about it, problem solving improves dramatically. And when you're not explicit, it makes no difference whatsoever how professionally you enact the process. कोई ठीक फर्क है. नहीं पड़ता. सही. You will not be an efficient problem solver, right? हाँ. Now, for me, essentially, Islamic learning is embedded in that कि आप शुरू से larger picture को explicit Bigger picture. रखें, Yes. right? So you have the reference to the notions of not just reflection, but looking at the end of something. So reflection is tafakkur, right? कि फिक्र करें, सोच. But there is tadabbur, which is dabara, which means the consequence of something or the result of something or why are you doing something, Yeah, yeah. right? So that's when आपका आज का जो डिस्कशन है इसकी शुरुआत ही वहाँ से होती है. Because that's human nature. What you're doing, this is our first podcast, right? Yeah. That's human nature. Yeah. We didn't plan it. We don't have any advisors telling us. Your first step, just out of instinct, is why are we doing this? And that's exactly what the Quran says. Yeah. Think of the end. Why are you doing what you're doing? Where are you going with it before you start on that journey? So I think वहाँ learning embedded है हमारी more than once you have that explicit end sorted, then elements आते हैं. But it's not primary. Yeah, elements are not primary. So I think I would have reached the same conclusion, although more intuitively, you know. So I think that is why fitra, nature, all of that intuition is intertwined, because when you look at learning very closely, आप जब schools के अंदर enter होके देखते हैं और आपको ये free hand दिया जाता है कि you are going to think about how learning can be done differently, तो you reach these conclusions, you know, कि ये मे भी मसला है. अब प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या है, मैं आपको अपना टेक बताती हूँ और आप मुझे बताएं if you can add to it as well. हम लोग तो जब भी एक नया स्कूल स्टार्ट करते हैं, हम तो शुरू ही करते हैं कि कौन सी किताब लगवानी है. ये सबसे पहला थॉट आती है, और उसके बाद पहली थॉट आती है, और उसके बाद होता है कि इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ाना कैसे. एंड हमारे सो दिस इज लाइक अ कंटेंट बेस्ड स्टार्ट, यू नो, बिकॉज एक किताब के अंदर सर्टेन टॉपिक्स होंगे और पेरेंट्स की भी एंजाइटी कि ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएं, किसी तरह से जल्दी ख़त्म करा दें, कोर्स ना रह जाए, ऑल ऑफ दैट याद हो जाए. मतलब मेमोरी से तो मेरे वैसे ही इतनी अब वो हो गई है. आई नो यू आर अ डिफरेंट, यू हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दैट, एंड आई नो हिस्टोरिकली मेमोरी की बड़ी इंपॉर्टेंस भी रही है, बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आजकल के टॉपिक्स जो कितने सही. इजीली एक्सेसिबल है ऑन योर फिंगर टिप्स, और उनको याद करना, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, राइट? जब आप उनको एक्सेस कर सकते हैं उस तरह से. तो एक तो ये बहुत ज़्यादा फोकस है कि कंटेंट हमें मिल जाए. दूसरा फोकस रहता है सब्जेक्ट्स की डिवीजन, यू नो, ये साइंस है, ये सोशल स्टडीज़ है, ये इंग्लिश है. लाइफ में ये इंग्लिश नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये सोशल स्टडी. लाइफ बहुत ट्रांसडिसिप्लिनरी है. लाइफ में यू आर लुकिंग एट लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी क्या कहते हैं उसको, यू आर लुकिंग एट यूजुअली थिंग्स इन अ मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन थिंकिंग मैनर ना, कि मतलब अगर हमारा कोई क्राइसिस है दुनिया में, मुल्क में, ज़िंदगी में, फैमिली में, तो आप उस क्राइसिस को होलिस्टिकली देखते हैं. आप ये नहीं देखते हैं कि क्या ये साइंस का क्राइसिस आया हुआ है या ये सोशल स्टडीज़ का आया हुआ है. Very true. You just look at, you know, what are the ends that we're going to be hoping for. जैसे आपने कहा बिग पिक्चर क्या है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, and what are the different steps that we're going to take to get there. But across those 16 years इस तरह की बात रेयरली कभी हो रही होती है कि हम एक पूरा प्रोजेक्ट लेके चलें और उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकें. सो मेरी तो ऑब्वियसली
बड़ी जंग रहती ही इन सब टॉपिक इन सब डिसिप्लिन्स की आपस हाँ में डिस्कनेक्ट से है और बहुत ज़्यादा कंटेंट फोकस से है. राइट I do have a take on how this needs to be done, but मेरे हिसाब से done, in a better way. But what do you think is the problem of schools right now? Why do you think failed institutions क्यों? And I know that they are, मतलब, it's not just my opinion. Generally, the perception overall is that the schools are not really keeping up with the times as they need to. आपके हिसाब से क्या मसला है schools के साथ अभी? स्कूल्स के आजकल क्या मसाइल हैं तो आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं एंड यू आर डूइंग मच मोर अबाउट इट आल्सो आई एम मोर लाइक अ थिंकर अबाउट इट एंड यू आर अ डूअर सो आई थिंक प्रैक्टिकल इश्यूज तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अवेयर होंगी विद इट अबाउट दैम लेकिन जहाँ तक कुछ फिलॉसफी बिहाइंड स्कूल्स की बात है तो मैं थोड़े बहुत शायद अपने आइडियाज शेयर कर सकती हूँ उससे रिलेटेड मुझे अव्वल तो ये लगता है कि स्कूल्स को हम ओवररेट भी करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस को भी ओवररेट करते हैं व्हेन यू ओवररेट समथिंग तो उसका एक मसला ये है कि यू आर बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड इट कैन नेवर मैच अप टू दैट role that you wanted to fulfill. Maybe that's just by design. Schools are not supposed to. So maybe there is not something fundamentally wrong with them, the schools. There is also something wrong with what we are trying to avoid by putting everything on the school. Like, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे अपने फियर्स होते हैं इनकैपेसिटीज होती हैं ट्रॉमास भी होते हैं उन सबको एक स्कूल के पीछे छुपा देते हैं कि हमारे बच्चे को ये स्कूल जा स्कूल रहा है तो काफ़ी हो जाएगा यू नो that is also something I would address if I were to do things differently, like from what I have done so far. One of the things I would tweak is to start with a grounded expectation. It should be grounded in reality. Now, it's interesting कि अगर आप grounding का concept देखें अब psychology में कितना चल रहा है, ground yourself, different techniques. But your expectations should also be grounded. Your opinions should also be grounded. What will it do? It will help you. You won't crash land. तो एक तो ये मेरे जहन में है कि schools को आप रियलिस्टिकली देखें कि उनका क्या रोल है और अगर उस एतबार से देखें तो मोर और लेस ठीक है ना होने से बेहतर है फॉर इंस्टेंस वी टॉक अबाउट लीडरशिप राइट सो देयर वाज दिस discussion in which Sheikh Hamza Yusuf he talks about it and he says that even a bad leader is better than anarchy. उससे तो बेहतर है वो अपना कुछ तो पर्पस सर्व कर रहा है ओवरली क्रिटिकल होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है दूसरा ये कि मुझे लगता है कि व्हेन वी फाइंड फॉल्ट्स इन द सिस्टम देयर इट काइंड ऑफ फ्लैटर्स आर वैनिटी यार ये इसमें मसला पड़ा है यू नो सो वी हैव टू बी माइंडफुल दैट वी आर नॉट इंडल्जिंग आवरसेल्फ ठीक है जो मसला है आपको लगता है वो बेहतर हो सकता है कैसे बेहतर हो सकता है दैट्स फाइन बट इंसान को पता नहीं चलता वो फिर इंडल्जेंस के लेवल पे चली जाती क्रिटिसिज्म यू कमिंग डाउन हैवी ऑन समथिंग सो this is where I would start with, to be honest. So I wouldn't start with the schools. I would start with somebody who is. Why do we need a school and what does it do for us? Why do you think there's anything wrong with the school? First that, like, किसी से पूछे जिनको मसला है उनको क्यों है मसला? That's important. From the end of the school, I would say कि अगर मुझे ये लगता है again आप you are the direct front liner of it. मैं तो observer हूँ. ये है कि स्कूल्स के हाई स्टेक्स भी होते हैं ऑपरेशन के दैट diminishes a lot of things that their potential also diminishes so there's a hadith in which the prophet sallallahu alaihi wasallam he says that kadal faqru an yakuna kufra aw kama qal or something like that I'm just I might be paraphrasing a little bit which means that करीब है कि गरीबी या गुर्बत इंसान को कुफर में डाल दे So that shows you the impact of high stakes things that human being is a very delicate thing. So any system that human beings make are also essentially delicate. किसी चीज़ के बहुत high stakes हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स अपनी potential को fulfill कर रहा हो. So like let's say like a school is running, they must break even. Then they're gonna make a strong business case. They're going to be led by the demand model. I don't know what's the space for philosophy in that or ideology कहाँ आएगी. What if they don't have enrollments? What if they can't pay the teachers? So again,
बड़ा फ़र्क पड़ता है कि क्या आप एक कुशन्ड स्पेस से आ रहे हैं या आप एक, क्योंकि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में और एक सेफ स्पेस में बहुत फ़र्क है। सो अ लॉट बिल्कुल। ऑफ द आई फील लाइक a lot of schools can do better if they were not running in that survival instinct space. I एब्सोल्युटली। feel that. But what is your, आपके तजर्बे में क्या है कि what are the top 3 things if you had a magic wand, you're like व्हाट ये वुड आई ठीक करो चेंज स्कूल अबाउट? का, ये ठीक करो और ये ठीक करो, 3 मैजिक वॉन्ड स्ट्राइक्स हैं आपके पास, what would you do? 3 ओह अल्लाह, दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर कि 3 सोच के बताओ। क्या पता मुझे बाद में कोई याद आए मेरे को, ओह! नहीं मैंने ये सोचिए बोल नहीं दी ना थी। आप, off the top of something you hate so you don't have to think. I think a lot of my work for the past 8 years is not only about like fixing schools per se. मैं तो कितने schools को fix कर सकती हूँ, मैं तो अपने को ही चला सकती हूँ ना जितना to the best of my abilities. I have kind of tried to advocate for a mindset shift as well alongside, because I feel like maybe I can't go and intervene in other people's business and ask them to change too much. But if I start this idea of making people think about some things that I've encountered in my learning journey, like parents okay, teachers okay. So maybe collectively, they start thinking about these things in their own affairs, and har koi competent enough hota hai to at least, start a movement of sorts. चाहे वो छोटी मोटी movement भी हो जाए, तो So आप with जब a magic wand you would नहीं, अभी still मैं do मैजिक that? वॉन्ड पे आई नहीं, मैं आ रही हूँ। Okay, बट व्हाट okay. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट एट इज़ कि जैसे वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक प्रेशर होता है स्कूल्स के ऊपर टू मीट द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द डिमांड्स ऑफ द पेरेंट्स आर इन एसेंस गवर्निंग व्हाट इज़ बीइंग taught at the schools as well. So if I really have my magic wand और मैं पहली चीज़ करूँ, that would be to to bring about a mindset shift in parents in determining what their needs are from a school. उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ देखिए स्कूल एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो वही Right, सर्विस प्रोवाइड करेगा जो कि पेरेंट्स सीक कर रहे हैं। right. बहुत रेयर, जैसे आपने कहा ना कि जिनके पास कुशन होता है वो इस तरह की एक अल्टरनेट मूवमेंट पे जा भी सकते हैं, जो कि हम गए हैं, बिकॉज़ वी आर अ Alhamdulillah. वेरी स्मॉल स्कूल, वी डोंट हैव लाइक अ ह्यूज ऑडियंस टू सैटिस्फाई, एंड हम तो स्टार्टिंग पॉइंट ही ये रखते हैं कि वी हैव गॉन down a different path and come and join us only if you have also gone a different path, but not everyone is going to Not every, yeah. do that. So starting point मेरे लिए होगा कि पेरेंट्स को की अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे शुड बी सीकिंग फॉर फ्रॉम अ स्कूल, आई वुड वांट टू इम्प्रूव दैट, बिकॉज उसी से कंपटीशन कोलैबोरेशन की जो बातें हैं वो आ जाएंगी, बिग पिक्चर वर्सेस एटॉमिक लर्निंग की बातें आ जाती हैं, वैल्यूज़ की बातें आ जाती हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वुड ideally a school be responsible, not exactly responsible for, but play a part in developing. ठीक है, Okay, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर जो ये जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट के, एक बंदे की पर्सनालिटी नर्चरिंग वगैरह, वो बड़े बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ द इंटायर प्रोसेस के, बस इसी में बस कुछ ना कुछ बन जाएगा, दे नॉट वेरी थॉट, they're not thought about that much. So number one, I would want the parents mindset to kind of shift towards what's really life worthy, hmm. and फिर वो demand put in करेंगे तो शायद वो meet भी हो. The second thing that I would want to really move away from is content, because I feel कि ये जो बहुत ज़्यादा pressure of content है ना, Hmm. इट डज़न्ट एक तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग कर देता है, बस ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आने चाहिए। प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब Hmm. देयर इज़ Hmm. सो मच एम्फसिस ऑन ठीक कंटेंट, है, याद कर लो, समझ लो, याद कर लो, समझ लो, बट हाउ टू रियली यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, सही, एंड व्हाट सही, काइंड ऑफ स्किल्स कैन यू रियली होन, वो उसका टाइम बहुत कम रह जाता है कंटेंट से, जब हम और फिर ऑब्वियसली एग्जामिनेशंस आर आल्सो ड्रिवन बाय कंटेंट, तो ठीक, एग्जामिनेशंस की नेचर ही चेंज होनी हो जानी है अगर आप कंटेंट को यहाँ से निकाल दें. And the third thing that I would want to change about the school is, um, I think overall जो emphasis वो place करते हैं on dispositions, वो बहुत different है from what it perhaps should be. And disposition basically ना इसी डेविड पर्किंस की ही पूरा ये जो थीम है लाइफ वर्दी लर्निंग का, उन्होंने कहा ये है कि टेक्निकली जो फ्यूचर की लिटरेसी, फ्यूचर की लर्निंग है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसका थर्ड कंपोनेंट डिस्पोजिशंस है। तो फर्स्ट वन इज़ कि स्कूल इतना बच्चों को इक्विप कर दे कि उनकी बेसिक फाउंडेशंस पर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप हो और उनके स्किल्स ऑफ दीज
subjects जो हैं वो develop हो जाए. The second part is generalized skills that are applicable across disciplines. ठीक है, जैसे negotiation हो गया, Okay. comprehension हो गया, Okay. prediction हो गया, reflection हो गया. So these Hmm. are like skills, evidence based learning हो गया, जो कि मैथ के लिए भी applicable है, साइंस के लिए भी applicable है. तो इनको content से detach करके पहले इन skills की foundation ले करना Hmm. और फिर content को just as a means to an end use करना. So Hmm. that's the second one. And the third one is dispositions, you know. So वो ये कहते हैं कि just knowing कि curiosity is a good thing is not going to be good enough, you know. You have to be Makes curious. sense. Just knowing कि being responsible एक अच्छी चीज़ is not going to be good enough. You need to learn what responsibility is. So how likely What, are you? how sensitive are you How to actually sensitive are use these you? dispositions? That's And interesting. that sensitivity needs to be built over the years, you know. कि empathy क्या है ये जानना in a definition sense is very simple, but really creating experiences and opportunities for children to actually practice empathy, practice curiosity, practice responsibility, practice resilience, practice all of these dispositions is something that needs to be done very thoughtfully, you know, as a part of a framework. ऐसे नहीं कि बस हो गया, किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी की बिल्कुल. धक्के, मतलब eventually तो everyone finds a way कि कोई धक्के खा के पहुंच जाता है उन conclusions तक, कोई नहीं पहुंचता, कुछ as adults like 60 years में भी पहुंच जाते हैं, anger उनका अभी तक काबू में नहीं आ रहा होता है, you know. या बहुत outbursts आ रही होती हैं, तो क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं होता किसी ने कि किस तरह respond करना है इन चीज़ों पे, relationships को कैसे maintain करना है. So this dispositions is one thing that I feel is generally not present as part of the life-worthy aspect of schools. एक हमारे पास पेरेंट हैं, उन्होंने ना अभी हमारे एक सपोर्ट ग्रुप में बहुत ही खूबसूरत बात की, and I just also wrote it down, and I feel like that's something that I want to learn from as well. And that is like मैंने अपने बच्चों को सिर्फ ये बताया है कि गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है. Emotions, negative emotions are a part of your design, so they are there for a reason. You're going to you're going to experience sadness, you're going to experience anger, you're going to experience rejection and all of those things. It's just that your choice of words after you are experiencing a negative reaction, or your way of, you know, showing that to other people or seeking help, that is going to really be more important, or that is going to really make a difference, rather than just you know, feeling bad about experiencing an emotion. Do you understand कि मतलब अगर हमें गुस्सा आया हुआ है, You judge yourself. we do judge ourselves, हाँ. but how do we reach out to another person जिसके साथ हमारा जिस पर हमें for instance गुस्सा आया हुआ है, and how do we handle that situation by using the best choice of words, you know? That's a very So tall ask from yourself कि जिस पर गुस्सा है उसके साथ the best choice of words. So वो अगर अपने बच्चे को ये चीज सिखा रही हैं आज से, you know, कि अगर आप emotionally you're distraught, so how do you express yourself with the best choice of words? You know, I feel like that's such a strong disposition. वो उस बच्चे के लिए कितनी different levels पे आसानियां create करेगी अगर उसको ये आदत बनना शुरू हो जाए, जो कि हम लोगों की बनती ही नहीं है. Okay. So that's anyway, I think बहुत, So these three things. yeah, बहुत ही लंबा No, answer है to no, a very that simple makes question. sense. But yeah, parents ka mind shift to what they should be seeking. The second Right. one is shift away from content to more Hmm. skills that are more transdisciplinary. And the Okay. third one is really building, using that time, those 16 years of a child's life, to build dispositions that are going to help them navigate through social relationships, and even understanding yourself at a later stage in life. Okay. No, thanks, Jazakallah, for sharing that. But I have another question for you. Why do you think these three things are the way they are right now? इसकी वजह क्या है? पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा fearful है. क्यों है? ये कि O levels नहीं किया, मैट्रिक नहीं किया, मार्क्स Why do you think that matters to them? इकोनॉमी है in the end, तो ये सारे अभी तो fear पेरेंट्स का primarily economic reasons की वजह Right. से है. So This is it comes to economy. that survival हाँ. and safe space वाली चीज, हाँ, right? हाँ. कि देखिए मैंने वही मैं एक और डिस्कशन भी I was part of that and I was just reflecting क्योंकि जैसे जैसे इंसान चीज़ों को डील करना शुरू होता है, you have less ideas and more like observations and your feelings go up
एंड आपके पास इंटरवेंशंस कम हो जाते, दैट्स हाउ आई एम हाँ, फीलिंग दीज डेज कि मेरे इंटरवेंशंस एंड सजेशंस बहुत कम हो गए ओवर टाइम. हाँ, इट्स मोर लाइक या लाइक जस्ट let me get into these shoes and see. हाँ. So, do you think कि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो ओवरड्राइव में है पेरेंट्स का फियर की वजह से? I do feel so to an extent. How should that be addressed? क्योंकि ये अगेन उसी सपोर्ट ग्रुप में ये बात आई भी थी कि किसी का बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, कुछ के जिनके परफॉर्म कर रहे हैं, एस कर रहे हैं, उनके लिए तो दिस इज नॉट अ कंसर्न. हाँ. ठीक है, वो तो कह रहे हैं बस मेरा बच्चा ये स्टार्स लेकर आता है, जिंदगी अच्छी है. जिनका नहीं कर रहा, उनका फियर बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्शंस आती जा रही हैं, बच्चे के ऊपर भी आती जा रही है, ऑल ऑफ दैट. उसमें फिर उन लोगों ने खुद ही प्रेजेंट किया कि व्हाट हैज हेल्प्ड अस, यू नो, एंड एज Very एडल्ट्स interesting. उन्होंने बताया कि ठीक है, हम भी परफॉर्म नहीं करते थे to हाँ. those levels, and now we're adults, we have a life of our own, we are making our own living and we are doing well. तो क्या ऐसा किया, किसके पेरेंट ने जिस has helped? So some of them said कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी उस चीज को एम्ब्रेस किया कि ठीक है अभी हम नहीं कर पा रहे, और Interesting. हमारा ना Very फियर interesting. विद आवर पेरेंट्स नहीं रहा. उन्होंने कहा ठीक है, दिस इज व्हाट यू डूइंग एट. उन्होंने हमारी स्ट्रगल को अंडरस्टैंड किया, और एक फियर बेस्ड रिलेशनशिप नहीं रही हमारी. उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चे, अभी तुमसे नहीं हो रहा, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है तुमसे, क्या कर पाते हो, वन स्टेप एट अ टाइम लेके उसको लेके चलते हैं. मतलब हमने कोई आइडियल गोल ये नहीं बना लिया कि स्ट्रेट एज, लम्स, हार्वर्ड, ऑल ऑफ दोज टॉप नॉच टिक्स लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये तुम्हारी जर्नी. वो शायद तुम्हारी जर्नी नहीं है, सही. वो बच्चे सही. के लेवल पर आए. और फिर उन्होंने स्लोली स्लोली उसको अनफोल्ड किया कि अच्छा तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, अच्छा तुम किस जगह पे स्ट्रगल करते हो, अच्छा तुम्हें पसंद क्या है, यू नो, हम और कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को लेके अपने फियर्स को बैक सीट पे रख के चलते रहे, और उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ बन गए. मेरे पास ना जो पेरेंट्स है ना, जिनकी अपने बच्चों के साथ इस तरह की रिलेशनशिप, सेफ स्पेस हो, अपने बच्चों के लिए जो वो सेफ स्पेस है, बिल्कुल. बिल्कुल. उनके बारे में जो चीज़ मुझे डिफरेंट नज़र आती है ना, वो ये है कि अगर इवन इफ द चाइल्ड इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर चाइल्ड. मतलब मेरी एक बच्ची है, शी I डिडंट get गेट it. लाइक अ वेरी Right. साउंड ओ लेवल का रिजल्ट, इतना उसको जितना होप कर रहे थे उस तरह नहीं आया. बट माय फादर ऑलवेज सेज आई विल बी प्राउड ऑफ यू. तो वो जस्ट कॉन्फिडेंस है ना उसके अंदर कि मेरे अब्बा ने Radical मुझे दिया acceptance. है, या कि यू नो आई विल फाइंड माय वे, माय फादर इज प्राउड ऑफ मी, मैम हो Hmm. जाएगा, यू नो. Hmm. या द फैक्ट कि यू नो, मतलब यही. एंड दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो कि बेचारे भी ले आते हैं तो उनकी जान निकल रही होती है, यू नो, दे आर शेकी अबाउट देयर परफॉर्मेंस कि ये क्या हो गया वो. इन द एंड तो सबने जब एडल्ट लाइफ में आना है तो बहुत हर कोई ही कहता है. मैंने तो कभी हार्डली किसी से सुना है कि भाई ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और क्योंकि हमारे ग्रेड्स हैं देखिए हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई. कोई भी ऐसे हार्डली एवर कह रहा होता है. Okay. एवरीवन व्हेन दे एंटर एडल्ट लाइफ और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो खुद ना कोई रास्ता निकालना शुरू कर देते हैं अपना, एंड दे फाइंड देयर प्लेस, यू नो. Hmm. कभी कभी इन नॉन एकेडमिक फील्ड, कभी इन Hmm. अनदर प्लेस. Hmm. तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना पेरेंट्स की कि Hmm. मेरा बच्चा कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता इट्स ओके, हमने उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाला, और जो कर सकता है हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या कर सकता है, और हम उसको साथ साथ सपोर्ट देते रहेंगे टू यू नो ट्राई दोज डिफरेंट ऑप्शंस. उससे बहुत फर्क पड़ता है. सो दैट्स नंबर वन कि ठीक है. आप Done. पेरेंट्स Yeah. का जो फियर है उसको किस तरह एड्रेस करें. Capacity building, do you think that should matter? Parents के अंदर की capacity, because once we become parents and children go to school, we kind of take that seat कि हम अब ये देखेंगे कि you know school कैसा है और result कैसा आ रहा है, and that becomes our position rather than you know okay I have to evolve or something. But you're right, yeah, parents how they respond, because I feel like whatever your child is going through, success, failure, not much, is still your chance to develop rapport with them. You know, if they are kind of losing their mind, that's still your chance to show up and tell them that yeah, you are kind of losing your mind, but it's okay, you know. Yeah. Like I started doing this, it might just be a silly thing to do, but you know, with my 4-year-old, अब वो क्योंकि वो इतना deep नहीं जाता बातों के अंदर, which is a blessing, and I enjoy his company because he doesn't do that kind of thing. So I tell him that, you know, मैंने कहीं से पढ़ा या सुना तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया, but it actually worked with him. Then I just said this thing to you that what will make me stop loving you? And he says nothing.
and we just do it every night. Yeah. I know it sounds very Western. Ye kaisi baatein kar. My parents never did anything like that. But it helps because we're so busy, Yeah. So ek verbalize usko kiya. I'm the last person to explicitly say these things, but Yeah. I felt like it made a difference. Yeah. And he feels that way. So now over time हमने ये कहा कि what if you have an accident, like आपका diaper related accident हो गया, Yeah. will that make me stop loving you? He says no. And I even said that what if mama gets angry? Yeah. Does that mean she stopped loving you? He said no. Yeah. So I'm also creating some room for myself. Yeah. You can mess up. I can also mess up. yeah. I can get very mean with you Yeah. sometimes. It doesn't mean I don't love Yeah. you. So you're right. एक capacity parents की शायद हमारे culture में ही नहीं है. There is grief and there is fear and there is not the concept of कि जो हमारा दीन हमें abundance का concept सिखाता है ना, that makes you feel safe. Safe, yeah. So parents, I also feel honestly like I can empathize. Yeah. बिकॉज जो आपके अपने फियर्स होते हैं वो आपके Project औलाद होता के है। अंदर इतने एम्पलीफाई हो जाते हैं बिकॉज हाँ। आपके पेन रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा होते हैं व्हेन इट कम्स हाँ। टू योर चाइल्ड योर लाइफ इज नॉट मेकिंग सेंस यू कैन डील विद इट इफ योर चाइल्ड्स लाइफ डजंट मेक सेंस Absolutely, absolutely. सो आई डोंट नो किस तरह किया जाए बट यू आर वेरी राइट कि अगर पेरेंट्स थोड़ा दे काइंड ऑफ काम डाउन and the bigger picture also kind of applies to the parents as much as it applies to anything else, right? इट कि आप क्या achieve करना चाह रहे हैं, like are you looking for, is all of this fear coming from this financial, as I fear, think so. if it is, then work on the financial aspect directly. Why do you have to work on it through the route of grades only? आपको डर लग रहा है कि आपका बच्चा फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंटली सस्टेन नहीं कर हाँ सकेगा, आप और मीन्स देखें टू गेट हिम टू दैट, आप अभी से उसका कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें, आप उसको इंटर्नशिप्स पे किसी चीज पे लगा दें, आप सही उसको किसी सही और डायरेक्शन में साथ साथ चला दें ना. इफ दैट्स अ फियर कि ये क्या करेगा, आप उसका कोई और ऐसा स्किल डेवलप कर लें विच कैन बी मोनेटाइज्ड लेटर ऑन. आप उसे फ्रीलांस काम करने की आहिस्ता आहिस्ता इजाजत दें और उसे इस तरह की चीज पे लगा दें, that's डिसिप्लिन very आएगा. interesting you say that So, that's very why do interesting. you really need to understand what is the bigger picture that's making you so fearful, and then take a few steps back and see कि अच्छा, what are other means to really resolve this fear, address this fear that I address this have, fear. right? Right, मतलब मेरी right. बहुत सारी चीजें जो है ना वो recent support group से ही आ रही हैं. The सही parents सही actually shared such amazing thoughts in that. और क्योंकि आप, yes, I'm an educator, I'm working with quite a lot of like children. अपनी एक बच्ची है, मेरा फिर भी limited perspective है. जो parent अपने हर घर से एक अलग perspective आ रहा था, वो बड़ा True. मजा ही का था. So True. one of the parents, she did mention that she was scared of the career choices because her girls were not perhaps doing as well in the academic scope of things. But the daughter herself, she presented a solution. She said, I'm really good with managing kids. If nothing works out, मुझे एक daycare खोल दीजिएगा. I'm going to support all other women who want to go and work. I will manage my daycare, so I Fair will be enough. great at it. Fair enough. So maybe for that kind of a child जहाँ पे आपको हो रहा है, you do start like a babysitting kind of a thing. बाहर बच्चे कितनी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं. हम पहले प्रोटेक्ट करते रहते हैं अपने बच्चों को till they are into their 20s or maybe at times 30s कि हाय इसको हवा ना लग जाए भाई और इसको ये ना हो जाए. फिर साथ साथ हमारा एक fear भी चल रहा होता है कि इकोनॉमिकली अपने आप को किस तरह, ये फाइनेंशियली किस तरह सस्टेन करेंगे. वो लोग तो फिर भेजते हैं ना बाहर, काम पे भेज देते हैं, खुद ही फाइनेंसेस मैनेज करना सिखाते हैं, कम पैसे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी. That's interesting आपने ये observe किया because again you're dealing with families and parents, right? So I came across this thing that they were saying that one of the problems जो हम लोगों को होते हैं क्योंकि हम अपने मसाइल को simplify नहीं कर पाते बल्कि मज़ीद बढ़ जाते हैं, वो ये है कि we want contradictory things at the same time. ये भी चाहिए. It's not और like वो you भी want चाहिए. something and that's the problem, Yeah. but it's the contradiction of Yeah. what you want, that's the problem. तो ये हम जो है ना एक अभी recently एक और discussion का भी I was part of that and they said the concept of regret and I was like it's just opportunity cost, you should Yeah. accept it. Yeah. आपको लगा ये करना है और वो भी कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज़ accept करनी है, make space for Yeah. within yourself to accept that you made that choice and it's okay. Parents के end पे I again like I would say that you're right, they're coming from a lot of fear, there are other ways of addressing that fear,
But one of the things is that जब आप financial कहते हैं ना, तो खाली वो financial means to a living नहीं होता parents के नजरिए में, या as a parent अगर मैं सोचूं. So this is something which takes me to the concept of capital. So capital is not just economic capital. There is also social capital. There is also, a lot of things go into that portfolio of capitals that you have. Yeah. Like, a lot of times लोगों को उस चीज को करने से खुशी भी नहीं हो रही होती, but it's part of the portfolio. Like Yeah. vacation है. Like you see so many memes के vacation from a vacation चाहिए and all Yeah. of that, and then you have the staycation and all of that. But idea is कि वो एक portfolio of capitals होता है जिसमें economic capital is just one part Yeah. of it, right? There's also social capital and other parts of it. So माँ बाप अपने बच्चे को हर लिहाज से सिक्योर करना चाहते हैं कि उसके ग्रेड्स अच्छे आए, वो एक बड़ा राइप कैंडिडेट हो फॉर अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी. इट्स नॉट जस्ट विल दे मेक अ लिविंग. दैट्स व्हाट आई फील. As in no, I completely get that, but I'm just now going to try to backtrack to the question ke how does that end up informing the school design, right, or the design of the learning space. तो उसमें तो a lot of what is being done at schools right now is kind of fixated on getting the right result. ठीक है. इसकी वजह से पूरा स्कूल डिजाइन इसी वजह से कि ओ लेवल का क्या रिजल्ट आएगा, उसी की वजह से कितनी मिनट की ब्रेक देनी है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कितनी देर पढ़ाना है, कितना उनको एलिमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है, क्योंकि ओ लेवल्स इज वेरी एलिमेंटाइटिस से भरा हुआ ना, like aboutitis and elementitis. Aboutitis. So it is still like O level when there's no practical project, right, per se. You're not doing any design thinking over there. True. So जो उसका format है वही format down to grade 1, even preschool तक आ रहा होता है, because that is informing the design of the schools right now. And O levels की success क्यों matter करती है? Again, yes, that can be social capital and economic capital and all of that. But there are other ways to still make all of that capital. It's not always just going to be O levels, right? But क्योंकि वो इतना amplified fear है, तो उसकी वजह से सबकी जान निकली रहती है. टीचर्स के ऊपर जो प्रेशर है, बच्चों के ऊपर जो, बच्चों को ना फ्री टाइम देने वाले लोगों को ना एक बहुत हमें भी टू एन एक्सटेंड कभी-कभी हो जाता है कि फ्री क्लास ले लेंगे. हो अच्छा है, like how do you deal with it? Let's say I'm a parent who comes to you full of that fear and pressure, and I'm saying I want my child, I don't have space for this kind of stuff, and I want them to be successful. How do you deal with it? Like a person who is just completely overtaken by fear. So let's not think of them as somebody who's ignorant or, but wo bilkul, they are not above the water anymore. They are with you. You are the principal, and she's saying, I need this. What will you say to them? मैं तो कहती हूँ फिर you're in the wrong place. I'm usually very blunt about that कि आप गलत स्कूल में आ गई हैं. If you're doing that. But honestly, even within our parents, मतलब a parent is also not like, they're not like a, क्या कहते हैं, they're not the same parent every day. As a parent, their state of mind also fluctuates so much that one day they want one thing and the other day they are okay with not wanting that same thing, and the third day they still want that thing. So that kind of fluctuates, so you just can't always tell parents to, okay, thank you, just because you have a fear, aap chale jaye. But what we try to help them understand is, again, looking at the bigger picture, where do you want to get at, what are the different ways of getting there and all of that. And उसके अंदर ऑब्वियसली एक ये तो एक वन ऑन वन पेरेंट के साथ हो जाती है ना डिस्कशन, साथ साथ ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर भी बात करते रहना कि कोई क़यामत नहीं आ जाती अगर बच्चा थोड़ा फ्री भी हो ले. उसको देनी है हमने ये स्पेस, तभी उसकी कोई हॉबीज़ डेवलप होंगी, कभी उसके इंटरेस्ट डेवलप होंगे, कोई वो एक दूसरे से लड़ेंगे तो कुछ एक दूसरे से बना के रखने की भी उनको अंडरस्टैंडिंग आएगी. वी डोंट हैव टू फिल देयर डेज टू द ब्रिम, बट ये तभी पॉसिबल है कि जब वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी वांट फ्रॉम द स्कूल. या फिर अगर ओवरऑल हम थोड़ा सा अपने आप को इतनी स्पेस, जैसे मतलब लाइफ वर्दी लर्निंग के सेंस में ना, डेविड पर्किंस ने तो एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है ना, पता नहीं इफ यू गॉट टू गो ओवर इट, जो मैथमेटिक्स है. Mathematics. He calls it mathematics. ठीक. Like what matters say.
ठीक है. So he said कि anything that is going to add life-worthy value, उसका एक डिसिप्लिन बढ़ा, मतलब एक टॉपिक बढ़ा दे. ठीक है, वो उन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया. ठीक है, किसी कोई भी ऐसी चीज है जिसके साथ यू कैन लर्न विद, नॉट लर्न अबाउट बट लर्न विद. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आर थिंग्स दैट यू कैन लर्न विद. उनका टाइम 2 टाइम्स बढ़ा दे. टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड टीचिंग देम, जस्ट गिव इट ट्वाइस द टाइम. लर्न विद वाली वो चीज़ें हैं कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की उन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप उन्हें बताते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये टॉपिक्स हैं, ये डेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी. तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बच्चा एग्जाम दे देगा और परहैप्स कोई ट्रिविया सॉल्व कर लेगा अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. या दे लर्न अबाउट एंड उससे इन द लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स शायद उन्हें कोई खास ज़्यादा फ़ायदा ना हो. वो फैक्ट्स भी भूल जाएंगे ना, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ें जाती हैं ना कुछ. तो उनके जो चीज़ें जिनके साथ आप लर्न विद कर सकते हो ना, उनका टाइम 2x बनाओ. तो अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ लर्न विद करना है ना, तो यू यूज़ दैट टॉपिक एज जस्ट अ रेफरेंस टू टीच चिल्ड्रन मोर अबाउट रेवोल्यूशन इन जनरल. Excellent. And yeah. to just trace patterns के revolution में होता क्या है, what is humans' quest for power, like how does this revolution compare to the modern revolutions that we have seen, all of those, what are the components of a revolution, and just use that as an example to teach them. ठीक है, so this is, अगर इस तरह की कोई चीजें हैं आपके कोर्स में तो उनका टाइम डबल कर दें. Can you give me an example, like learn with or learn about कि पाकिस्तान के लिहाज से आप क्या देंगी, like let's say for a middle school or whatever level you choose. पाकिस्तान की हिस्ट्री से आप कह रहे हैं? Anything, you're free to decide. हमें local 14 पॉइंट्स याद करने होते थे ना कायदे आज़म. ठीक है. That's like learn about. ठीक है. कि उन्होंने 14 नकात ये दिए और ये याद कर ले कि वो 14 नकात क्या थे. किसी को याद नहीं है अब. ठीक है, क्योंकि यार टाइम खुद. अब इसी को अगर आपने लर्न विद करना है तो आप उसको लेके जा सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में, जहाँ पे एक लीडर को अपनी पोजीशन भी सिक्योर करनी है एंड साथ नेगोशिएट भी करना है विद अनदर पार्टी टू मेंटेन देयर पावर. ठीक है, बट एट द सेम टाइम नॉट साउंड वेरी आई डोंट नो top down. ठीक है, so what would a good negotiation look like? This is what Jinnah said. What would you have said at this time? And make it a learn with kind of that's excellent thing. Yeah. So what is you use that to teach negotiation generally. So learn with could twice kar dein, and anything that you feel is not learn with worthy. ठीक है, जैसे usually quadratic equations कहते हैं. You have some baggage with quadratic. क्योंकि नहीं यूज की मैंने, बट मुझे पता है सरली वकास हमारे स्कूल में वो तो कहेंगे क्या बोल रही हूँ मैं वहाँ पे. गेट सो अपसेट कि मैं ये बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो कि इंजीनियरिंग में या इन फील्ड्स में इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड थिंग, बट बहुत लोग नहीं बनते इंजीनियर्स. हमारे ना वो जो उसकी क्रिटिक भी है ओवरऑल करिकुलम डिज़ाइन यूनिवर्सली जो चल रहा है. मतलब आप इधर का उठाएं, आप US का उठाएं, आप UK का उठाएं, curriculums are the same everywhere and they are kind of the same. Very for this similar, mobility yes. as well कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़े, but they are very like in depth for a given subject right now. वो इतनी complication में जाते हैं for a given subject जिसकी अभी शायद need नहीं है. अभी बच्चों के school level तक what matters more is developing these learning habits and everything. लेकिन वो चले जाते हैं इतनी depth में with a certain discipline कि बाद बच्चे को असल में नहीं समझ आता इसका मैं क्या करूँगा बाद में. True, so इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे उनका meiosis, ठीक है, it's a good concept to know about, but right now like most of the humans are not going to do anything with mitosis and meiosis in their lives, right? So इस तरह के जो disciplines हैं उनको थोड़ा सा आप divided by 3 time कर दें. Yeah, that's you very touch interesting. upon them and then you just move on. You just don't delve into them in a lot of detail because they are not perhaps going to help everyone, whereas taxes हर किसी को फाइल करने हैं या फिर hopefully हर किसी को कभी ना कभी कहीं जाके देने हैं, या रिलेशनशिप सबको मेंटेन करनी है. True, very true. So you divide these disciplines these topics by 3 in terms of time, and जैसे वो कहते हैं कि आप maths में spend more time on probability and statistics, practical because that's application like really applied going to be applied in a lot of other areas of like different daily life. daily You life, apply your stats as compared to right? algebra Yeah. maybe. Yeah. So ये तो that's excellent. Learn with and learn about. And
I had no idea about this, and I feel like I would have been a very different person अगर अगर आपके सारे मेरी experiences एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऐसा होता. I don't think it's just like, oh, आपको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि नहीं. आप what you grow into also changes, yeah. because what is highlighted to a child becomes part of their identity also. You know, so it's very different spin on learning. Yeah. I think less is more is where Less this is more. you know, Less is kind of more. all channel towards कि time कम लगाएं cram करने में, processing का time ज़्यादा दें बच्चों को, तो सीखने की opportunities बच्चों के लिए overall holistically काफ़ी बेहतर हो जाएंगी. Yeah, that's excellent. But I don't even know कि मैंने ये किस चीज़ के जवाब में वो पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे. हाँ. पेरेंट्स का fear, and then you know how the school. I asked you that if a parent comes to you, and then how would you respond, and then Yeah, from yeah. there we took it. I would just close this one thing about the parents with one comment, and that is कि ये जो हमारा एक एजुकेशन को लेके भी ना एक ऑब्सेशन और पोजेशन वाला रिलेशनशिप बन गया है. You know, this has to settle down. इसके लिए हमें थोड़ा सा, मुझे पर्सनली लगता है कि एज अ पेरेंट, नॉट एज एन एजुकेटर, आई एम नॉट टॉकिंग एज एन एजुकेटर, एज जस्ट अ पर्सन हुज अ पेरेंट एंड हु थिंक्स अबाउट एजुकेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगी इसके साथ कि जो हमें ऑब्सेशन है ना आजकल, जो गोइंग वाइब चल रही है, एक्स्ट्रोवर्टेड है, बट जबकि हमारा जो दीन हमें सिखाता है इज मोर इंट्रोस्पेक्शन. You know, introspection that grounds you, that grounds your reality also, that also helps you navigate certain irrational fears you have. It helps a lot, it composes you, right? So in that regard मैं बस यही कहूँगी कि देखिए, हमें ये हो गया कि पता नहीं क्या होगा और how will my child deal with this, right? Because let's say Yeah. capital नहीं है आपके Yeah, पास, yeah. financial capital नहीं है, social capital नहीं है, जो भी वजह, right? So you have fear, of course, because domination है and all of that. there's a recent study एक हुई कि उन्होंने कहा कि जो mass shootings होती है, school shootings होती है in the US, they did this study and they said कि उन्होंने compare किया stress response and stress levels of people who were present in the school shootings and people who were looking at the school shootings and thinking about them. And they said people who were present in the shootings had lower stress response. Oh God, I can't even imagine that. Yeah. Imagine Yeah. then somebody who's just learning about it via Yeah. the television, news आ रही है या किसी ने बताया है, उनके stress levels देखे. And I was literally like, I just stopped, and for a very long time I kept thinking about this. Yeah. And I felt like it made sense to me कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किसी मौके पे डालते हैं, आपकी तो वो capacity. आपका रब है, तो वो आपको रिसोर्सेज दे देगा टू डील विद इट. यहाँ से बैठ के अगर आप एंटिसिपेट करेंगे कि ये ना हो जाए, यू आर लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस. Absolutely. बट व्हेन यू ग्राउंड योरसेल्फ इन दैट कि जब मैं वहाँ हूँगा तो ये मेरा रब है, ये मुझे सबब कोई बना देगा, एंड ही विल टेक केयर ऑफ मी, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन. सो एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी जो हमें इतनी ज़्यादा हो गई है, I wouldn't want to judge and say it doesn't suit a believer kind of thing. I've gone through all of it, like the whole gamut of things and fears and lots of flight things. and fight reaction is for all things. And but no amount of religious knowledge helped, to be yeah. honest, in that. You Yeah. know, learning वही बात है कि जो लाइफ वर्दी लर्निंग है Yeah. आपकी, रिलीजियस एक तो नॉलेज हो गई, एक आपकी लाइफ स्किल्स होती हैं, रिलीजियस भी स्पिरिचुअल भी, वो बहुत आहिस्ता डेवलप होती हैं, राइट? सो आई फील लाइक अगर आप एंटिसिपेट करेंगे, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू थिंक अबाउट दिस, कि आप एंटिसिपेट ज़्यादा ना करें. जैसा हदीस में भी आता है कि अगर आप परिंदों की तरह होंगे, वो सुबह भूखे निकलते हैं, रात को उनके पेट भर जाते हैं, यू नो. So you have to focus, right? And I'll close this for the parents and for myself with a reminder that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gave us the guidance and he said that, you know, each one of you is a shepherd and you will be asked about your flock only. बस आपसे आपके फ्लॉक के बारे में सिर्फ ये पूछा है कि जो आपकी कैपेसिटी थी उसमें did you do your best? That's it. You're not even supposed to keep your flock alive. Got eaten by the wolf. Got eaten by the wolf. आपकी as a shepherd या as जो चरवाहे थे, आपने उसका ख्याल किया, ध्यान किया, that's it. So don't overburden yourself कि इसको बच्चे को दुनिया और आखिरत में सुरखरू पूरा मैंने करवा के ही छोड़ना है. You know, that's not your job. You're losing the pleasure of your life over it also. That's what I feel. You don't savor your life.
You're too closely identifying with how successful your child Child is, is. takes away from the joy of spending time with the child. Like you're saying, बच्ची अगर कमज़ोर है तो आपका उसके साथ रिश्ता फिर भी अच्छा हो सकता है, and you can make very good memories. But you have to be willing कि wanting more, obsession, possession, कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए. Because हदीस से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस मिलती है. एंड दिस इज द लास्ट वन आई विल मेंशन फॉर माय सेक एंड अदर पेरेंट्स इज दैट Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. From the beauty of the faith or submission to Allah subhanahu wa ta'ala of a person is minding your own business. So knowing, like you said, why are you doing what you're doing? What is your flock? What is your business? What do you want? That's very important. Yeah. And like you see that in the prophetic tradition, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's sitting with the Sahaba rizwanullah anhum ajmain, and he drew so many multiple lines, and he said, "Ye sare baki raste hain, and there is one line which is the Sirat Mustaqim." So you have to be able to let go of distractions. Yeah. Again, fears को हमने manage करना है. We cannot overcome them. We have to manage them. Yeah. Right? They're part of our maybe subconscious or something. So, and the Quran also tells us कि शैतान आपको तंग करेगा खौफ दिला के. Fear is not always of ये भी fears है ना, future हाँ. बच्चे का क्या. So तवक्कुल, growing into your faith is important. I feel like as you grow Absolutely. older, like you grow into your faith. कुछ चीजें आपने बचपन में सीखी हैं, now is the time to grow into it. Absolutely. Yeah, so Absolutely. that's something I would No, I say think to that's a parents. very, very sound advice, and I think you were giving this advice to yourself as much as you were giving it to everyone else. I think I need to give this to Yeah. myself because it's never a good place to come from a place of fear. It's never good. You are not yourself. That's Not true. yourself. Anyway, so that was the first thing. Parents का mindset change हाँ. करेंगे. Content की आपने बात की. I think a little bit you also covered that in learning with and without. I think basically if we address number one, we end up having space for number two and number three. Okay. A school has limited space, right? And time. आपको भी टाइम टेबल खैर आपने हमारे साथ वो टाइम गुजारा भाई है जहाँ पे वी जस्ट ट्राइंग टू फिट इन थिंग्स एंड यू लाइक मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए हम कहते हैं माविश कहाँ से लाएं इट्स लाइक so complex to change things in a timetable because True. हर किसी को move करना पड़ रहा हाँ. होता है and all of that. So timetable को देखने के बाद ना इंसान को realize होता है कि स्कूल के अंदर कितना limited time है आपके पास to really be doing something meaningful. And किसी से टाइम लेंगे तो किसी को देंगे इसी तरह चल रहा होता है. So by changing or by actually building the capacity of the parents to have slightly different expectations from schools can really give the schools that freedom to work on number two and number three. वो शायद अगर they're doing a little bit less of a math class, so maybe that kind time can then be invested into dispositional, frameworks, जैसे SEL हो गया या ओवरऑल बच्चों को फ्री टाइम दे दिया ताकि वो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में कर सकें या इलेक्टिव्स हो गया जो भी. एंड द अदर वन इज लाइक कंटेंट से अगर हम हटते हैं तो फिर यस मे बी द स्कूल विल आल्सो फील less pressure to cover the course and be able to create maybe अगर हम लोग तो क्योंकि we have this kind of a parent body जो इतनी supportive है कि हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह that we do create these experiences more often. But अगर एक स्कूल में साल में 3-4 भी more problem based learning excursions हो जाए जहाँ पे the children learn to play the whole game. वो कहते हैं ना कि learning happens on the edges. कि जो लर्निंग आपने स्पोर्ट्स में की है या जो लर्निंग आपकी आर्ट्स में हुई है वो आपकी नहीं हो रही होती कभी कभी बाकी सब्जेक्ट एरियाज में. दैट वन स्टेज विद यू, दिस वन डजंट. Experiential learning. Because you learn play the whole game. You are a participant, you immerse into it, you at times are working with teams, the entire experience is very tactile and very hands on. That kind of lasts longer. Whereas Baki is flip the pages, memorize, flip the pages, sit on your own seat, don't look at anyone else's work, just complete your own thing. So, You're right. अगर 5-6 ही बच्चे के साल के अंदर कोई इससे experiential learning experiences हो where they have to really start with the problem at the beginning and they are expected to come up with a conclusion maybe by the end of the week to a certain thing, that is going to really address number two
to a very large So extent. what I get from what you have just mentioned is we have limited resources in terms of our time and the Time. child as well, Yeah. and whatever opportunities we have. And agar hamare fears thode se managed ho, then we can actually enjoy things which are besides those And more life worthy. more life worthy, Yeah. right? So one question here. Sorry, I keep making piling question on top of a question. इस किस्म का लाइफ वर्दी, अगेन यू हैव दैट मैजिक वॉन्ड, राइट? Yeah. इस किस्म की लाइफ वर्दी अगर कोई लर्निंग हो, व्हाट वुड बी योर कि ये मस्ट डू है, ये तो ज़रूरी है लाइफ वर्दी चीज़, ये ज़रूर मैं डालना चाहूँगी, व्हाट वुड बी दोज थिंग्स? आई थिंक क्योंकि मैंने तो सोचा हुआ और मैंने डाली भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई अल्हम्दुलिल्लाह। विल जस्ट टॉक अबाउट दोज. जैसे एसेंशियल जो है आप हाँ, कहेंगे इसके बगैर गुजारा नहीं है। आई फील एक तो सोशल इमोशनल लर्निंग इज वेरी लाइफ वर्दी, कि how to be with each other and how to really respond to your own emotions, ठीक है। relationships manage karna, resilience, growth mindset, all of that falls into social emotional learning. So that's really really life worthy. Financial literacy is very life worthy as well, so teaching children how to be financially independent other than the academic area, वो लाइफ वर्दी है. मेरे हिसाब से कोई ना कोई ऐसा टूल होना चाहिए बच्चे के पास टू एक्चुअली be able to express themselves in ways that they feel comfortable. Like मुझे बड़ा उलझन होती है कि मुझे आर्ट नहीं आता उस तरह से, फाइन आर्ट नहीं आता, you know, and I just feel like, you know, if I knew or if I was good at arts, I would be expressing कभी frustrate हुआ मैं बंदा, I might have made a painting and it would have made me feel better, you know, so like a creative outlet of sorts एक कल्टिवेटेड हैबिट होना हो उस चाहिए. चीज़ That's very की। life worthy, you know, to So have that's interesting. Social emotional learning, financial learning, financial and expression. The expression. fourth one might be like something that really allows children to stick to learning but still be motivated to do so. To hard learning, this is sports होती हैं, you know, अच्छा, that's like you lose and ग्रिट then grit ग्रिट आती है बनता उससे. है। So ओके। anything along that lines that kind of builds that grit हम्म। in a child, कि it's going to be really hard, learning is going to be really, learning a language is like grit inducing, you know. So You think so? I think Arabic ने तो हम लोगों को ऊपर नीचे कर दिया था, तो ग्रिट उसमें मतलब चाहिए होता हाँ है? हमें तो Yeah. चाहिए था. हाँ, नहीं नहीं So that's anything that really allows you to persevere हम्म is going to be pretty life worthy. So वहाँ पे मुझे होता है कि hobbies need to be taken very seriously as well. You know, there shouldn't be just like passing thing. अच्छा, इस सब तीनों चीज़ों तीनों हाँ. चारों जो भी आपने भी निशानदेही जिनकी की है कि सोशल इमोशनल फाइनेंशियल हो गए, एक्सप्रेशन हो गए, ग्रेट. और एक और भी ग्रिट। है, फिर आप उसके बाद अपना हाँ सवाल. ज़रूर। और इसके अलावा आई फील लाइक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लर्निंग which is design thinking / problem solving oriented. So where really children start with identifying a problem or a need, and then they develop a solution. So this can feed into entrepreneurship, this can feed into scientific thinking, and you know, coming up with this can feed into social This is so sociology amazing as listening well. to So this. It hopefully sounds like a 5-point star that, you know, like I'm big with these things, like how to visualize things. But that's so amazing to think of it like that. And it also helps with the overwhelm that parents or educationists, all of us feel. If you kind of make these areas and you say, "Kya thode thode mein in sabko cultivate over time karu," you also don't feel like you're going crazy or running around like a headless chicken. Ke bachcha kuch seekh raha nahi ho raha nahi ho raha, you know. Kind of have parameters for yourself. That's very helpful, honestly, to have these streams in mind, what you have identified. That's extremely helpful. Yeah. नया स्कूल बना लेते हैं अब इन स्ट्रीम्स को सामने रख के. Because Edopia में ये हो रहा है, but I think not a lot. It's not like, you know, these are the 5 streams and this is how it's being manifested. Obviously, we are also prey to O levels. So You pray to O levels, yeah, we man. are. I had that conversation at Edopia. Yeah. मैंने उनसे बात की तो one thing was that कि bottleneck जहाँ एक challenge है जिसको अभी figure out नहीं कर सक रहे, वो O levels. O levels है. Ironically, the ordinary thing has caught you. Yeah. नहीं ये तो इस सब 4-5 जो मेन 5 areas अभी आपने बताया, I'm sure if you think about it more, you will come up with more as well. But it's important for parents and teachers and all of us to remember these things. And you're right, like
much older, having gone through parallel systems of education, ये वो करके भी बहुत सारे ये नहीं, I didn't have these. And those were that proved to be my Achilles heel जिसको आप कहते हैं, वो बन जाती है आपके लिए, because आपने ओवर डेवलप कर लिया एक चीज को और एक बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू kind of carry your life, because you need all of that. So in developing this as a principal, as a head of school, what do you think is the role of the teacher in developing this? Is the teacher a guide on the side type चीज, या वो जो कहते हैं कि sage on the stage हो कि वो सारा कुछ लेके चलेगा, या वो इंस्पायर करता रहे, या फिर फ्लूइड रहे? आई थिंक टीचर्स एचआर वैसे इतनी टेक्निकल फील्ड है ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि सेज ऑन द स्टेज वाली पे तो आप कम ही पहुंच सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है इस फील्ड के अंदर. लोग आते हैं, कुछ अर्सा रुकते हैं, कभी चल जाते हैं, होते हैं बहुत सारे हु आर हियर फॉर द लॉन्गर रन, इन द लॉन्गर रन एज वेल, बट जनरली इट्स नॉट लाइक अ वेरी सॉलिड फील्ड per se. ठीक है, तो उसके अंदर तो इट हैज टू स्टार्ट विद द स्कूल हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस. द कैपेसिटी जो टीचर्स की लानी है वो तभी आएगी जब आपके पास इन चीज़ों को इन प्लेस लाने के फ्रेमवर्क्स हैं. What's the framework for social emotional learning in a school? It just can't be like a teacher feels like teaching social emotional learning, so she teaches it. Very जो interesting. मेरी लर्निंग है across all these 8 years at Edopia, जिस चीज़ का फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका रूटीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फिजल आउट कर जाएगा. If you can't measure it, You it can't won't get measure done. it. You don't know how to go out. You don't know what to tell to a new person who, matlab, the first person who was there was amazing. Everyone loved them, and they had such a huge following. Now they're going. What would the new person be expected to do is going to really be dependent on the structure or the framework that you have, like how to fill in these shoes now, or सारा कुछ. ठीक है, so सबसे पहले तो framework की बात आ जाती है कि what are the SOPs of having this specific skill in place या this kind of life-worthy learning in place. वो जब एज अ स्कूल आप एज एक सिस्टम बना लेते हैं, उसके बाद रॉबिन जो हमारे कंसल्टेंट है वो बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं, आई थिंक दिस इज हाउ टीचर्स हैव टू बी एट ऑल टाइम्स. इट्स लाइक behind, besides, ahead. Behind, besides, And ahead. So Okay. उसमें ये है कि it's never like always sage on stage, and it's never always like an observer or facilitator. A teacher has to do a lot of artful balancing in an ideal situation. So उसमें they have to identify कि अभी I'm going to take a step back, I'm going to go behind, and I'm going to look and listen so that I can inform my future teaching practices. Then they have to identify opportunities for coming besides, where they ask very smart questions from the students and they help the children think in directions that they wouldn't have thought about without the intervention of the teacher. And then there is ahead as well. There are times you have to come ahead and you have to tell children things that are worth knowing and they would not have encountered themselves. But unfortunately, होता ही है कि it's usually ahead. Usually ahead. कि ये सुन लो, ये समझ लो और बस खत्म होगी टीचिंग, So जो behind और beside होते हैं equally valuable होते हैं. So I think the That's very teachers interesting. really need to keep on shifting their positions between the three based on the need of the situation that's in front of them. But that's a very tall order. That's a tall order, right? I think ये बड़ा मसला है कि कुछ scarcity कुछ है, कुछ For बेबरकती sure. है या जो भी आप उसको कह लें, लेकिन हर लिहाज से we are running short on resources. We have maybe desire to do better, be better, but somehow we are not able to unlock that. And उससे dissatisfaction भी आती है, I'm sure, because when you really like something and you're not able to really fulfill it, then you're like, I don't want to do it, Dissatisfaction भी teachers के अंदर बहुत आता है. As a teacher, I can say that I felt that way also. I wanted it to be a certain way. But interesting कि जो आपके he's Robin is a preschool consultant, na? Robin preschool Duckett. consultant. Yeah. So he says that the teacher should be behind, beside, ahead. Ahead. Yeah. They have to choose. Because Montessori है ना, तो Montessori कहती है behind.
just look and see what children are doing and intervene minimally. पाकिस्तान में आपको क्या लगता है यूजुअली अहेड है बस? अहेड है क्या? बिहाइंड बिसाइड कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं बस। लाइक जनरली मतलब इडोपिया में चले फिर भी देयर इज लाइक हम सिखाते हैं हाउ टू डू बिहाइंड एंड बिसाइड काफी like What is that one thing which you feel that teachers need to just stop doing in terms of being always ahead? This is just not the age for it anymore. अभी नहीं करें I teaching. think इडोपिया में ना हमें thoughtfully सिखा रहे होते हैं like बहुत अच्छा। mindfully के behind और besides कैसे करना है. One thing that the teachers really need to stop, there are two things और उसके ऊपर पूरी trainings मैंने दी हुई हैं. One is speaking a lot, like speaking for more than 10 to 15 minutes in a class. हमारी टीचर्स तो थ्रू आउट बोलती रहती है ना, खासतौर पर जब जनरली पाकिस्तान में जो एक नॉर्मल आती हैं और लेक्चर देना शुरू करती हैं और 40 मिनट 50 मिनट बोलती रहती हैं. A good lecture should not be more than 10-15 minutes बस maximum. 10-15 minutes, that's it. That's it. And the second thing, and उसके बाद obviously बहुत ज़्यादा आ जाता है group structures and everything. उनको किस तरह use करना है to really develop the class in a more holistic manner. खैर it's a talk of its own. दूसरी चीज़ है they really need to ask students to stop raising their hands to ask questions. ये बहुत ये जो है ना, तो इसका नेमुल बदल क्या है कि अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे सवाल करने के लिए तो फिर आप क्या करें? सवाल का जवाब तो टीचर्स वैसे ही नहीं देती हैं. बिकॉज अमूमन वो सवाल अगर हल्का सा टेक्स्ट बुक से साइड पे हो जाता है ना, टीचर भी कहती है मुझे क्या पता. अच्छा ठीक नहीं है. दे पाती ना, ऑफन नहीं दे पाती अनलेस वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, वरना वो कहती है फजूल सवाल ना पूछे, चले आगे चले. ठीक है. बट व्हाट आई एम kind of saying is कि teachers also need to stop asking children to raise their hands to answer, because उसमें ये होता है कि often कुछ वही बच्चे जिनको आंसर आता है वो हाथ उठाते रहते हैं, and it becomes like a discussion between the child and that teacher and everyone else zones out. They're like क्या चल रहा है, you know. So if I really had to change that, तो मैं, and we do teach at Edopia how to do it differently, जहाँ पे children also get to learn. Do you offer these trainings to outside teachers as well या Edopia के ही teachers को मिलती हैं ये trainings आपकी? अभी तक तो I've been giving them to teachers at Edopia only. लेकिन yes, one of my courses जो कि मैंने Rhonda Bondi, मेरी प्रोफेसर थी at Harvard, उनकी पूरी कोर्स वर्क से, मतलब जो उनकी बुक थी ना उसके बेसिस पे बनाया था. तो I want to make it more accessible for teachers everywhere that would be as well. So helpful. Because उसमें ये look and listen भी आ जाता है, behind and beside वाली चीज़ आ जाती है. एंड अभी हमने रिसेंटली दिसंबर में एक ट्रेनिंग और की थी, तो जिसके अंदर ये था कि हाथ नहीं उठाने को कहना किसी को, फिर कैसे पढ़ाएंगे. सो जस्ट गिव मी वन एग्जांपल कि अगर आपने अपना 10 मिनट का लेक्चर दे दिया है, उसके बाद आप ओपन टू क्वेश्चंस हैं, तो क्या करें, किस तरह चले? So there are like 4 structures in a class. There is lecture, table talk, group routines and individual work. Okay. ठीक है. So in a given class of around, क्योंकि हमारी क्लासेस 70 minutes की होती हैं, there should be around 2 structures maximum. बहुत स्ट्रेच किया तो 3-4 के 4 नहीं चाहिए होते हैं एक ही क्लास के अंदर. ठीक है. ठीक है. So for instance आपने अगर कोई, एंड उसके कुछ कॉम्बिनेशंस हमने सजेस्ट किए हैं कि जहाँ पे I'd say कि group routine and individual work for instance are not a good combination to be put together in a class. ठीक है. वो आप अवॉइड करें. लेकिन जैसे अगर किसी ने स्टार्टिंग पोजीशन आई, किसी ने लेक्चर दिया, उसके बाद आप 10 मिनट्स के बाद एक ग्रुप रूटीन पे चले जाएं. ग्रुप रूटीन में ये होता है कि सब बच्चों को इक्विटेबली पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. आप 5-6 आपने ग्रुप्स क्लास में बनाए हुए हैं, 3-3 4-4 बच्चों के एक प्रॉम्प्ट आया है, आप बच्चों को बताएं उस प्रॉम्प्ट से किस तरह एंगेज करना है. एंड फिर हर ग्रुप में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बताता है कि हमने इस ग्रुप में इस बारे में क्या बात की. सो कलेक्टिवली यू आर एबल टू गेट द वॉइस ऑफ एवरीवन इन द क्लास विदाउट asking one specific child to raise their hand. ठीक है. जो टेबल टॉक है उसका भी हम टाइम कहते हैं कि यूजुअली आप 10 to 15 मिनट्स से लिमिट करें. टेबल टॉक इज दैट, यू नो, raise your hand and ask a question and answer, but individual. keep it like 10 to 15 minutes. Because if you feel कि मैं सिर्फ 1-2 बच्चों के ही आंसर कर रही हूँ, क्वेश्चंस आंसर कर रही हूँ, then maybe you're not on the right track. पूरी क्लास ऐसे नहीं गुजरनी चाहिए. So you just keep it for 10 to 15 minutes and then move on to another structure, ताकि वो मोनोटनी भी ब्रेक हो और ज़्यादा लोगों को बात करने की भी अपॉर्चुनिटी मिले. पैटर्न सेट हो जाए. एंड द रूल ऑफ थंब इज कि जो चीज़ बच्चे एक दूसरे को सिखा सकते हैं वो टीचर को उन्हें नहीं सिखानी चाहिए. So the teacher's responsibility is to really only be teaching the most complex aspects of the class. Interesting. The hardest
parts. Interesting. And Very then there are like interesting. simpler learnings which children can reach on their own while they're talking to their friends and everything. So like keep it to that. That's very interesting. Yeah. Very interesting. Right. So I guess wrap up karte hain, and I'll let's do just that. maybe like throw one last question at you and let's see what you'd say. So हमने बात की life worthy learning की, and we talked about how generally, you know, what is being taught at schools is often driven by expectations which are rooted in fear, and if a lot of that changes, then they kind of get more space to do things differently as बिल्कुल well. बिल्कुल. Um, मैंने बताया कि you know if I were to pick disciplines या areas that are more life worthy तो वो ये होते. What would you have picked? And also keeping in mind that we're entering in हम कहते हैं post normal times में हम enter हो रहे हैं. Post normal This is what they times. call it in like एजुकेशन टर्म्स कि एक अच्छा, नॉर्मल था normal. जिसमें सबको समझ आ गया था कि ये पैटर्न है. Okay. जैसे आज कभी कोई पेरेंट आके मुझे कहते हैं ना कि मैंने अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उसे ओ लेवल्स करना है. मैंने कहा आपको पता है 10 सालों में डॉक्टर बनने के लिए क्या पाथ फॉलो होगा? वी कांट टेल दैट एनीमोर. हम पहले बता सकते थे कि इंजीनियर बनने के लिए ये 16 सालों का पाथवे है, आपने इस तरह गुजरना है तो आप इंजीनियर बनते हैं. बट आई रियली ऑनेस्टली कैन नॉट से इट विद अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी कि आप डॉक्टर कैसे बनेंगे आगे. यू नो इन 10-15 बिकॉज वी हैव एंटर्ड पोस्ट नॉर्मल टाइम्स जहाँ पे our expectations are of what future is going to be are changing so dramatically. साल के बेस पे इतना चेंज आ जाता है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है. कल मैं आपको चैट जीपीटी भी दिखा दिया तो आपको तो वैसे ही हट गया. क्या होता है फेथ फ्रॉम ह्यूमैनिटी हट चुका है कि अब तो राइटिंग इज ऑल्सो नॉट अ स्किल एनीमोर. पहले Writing हम is कहते not a थे skill. राइटिंग विद अ पेन इज नॉट अ स्किल एनीमोर बिकॉज टाइपिंग आ गई है. Yep. अब तो राइटिंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ स्किल. यू नो It's तो not a बच्चों ने skill. क्या व्हाट रियली नीड्स टू बी टॉट एट स्कूल्स नाउ व्हिच इज गोइंग टू और एट ऑल मतलब स्कूल्स क्या होम स्कूलिंग व्हाटएवर यू नो. आपको क्या लगता है? एंड ऑल्सो मतलब in all of this chaos that we're experiencing, I think one thing that kind of still stays intact is our religion. You know कि वो principles जो हैं वो हर साल के साथ change नहीं कर जाते. So it gives us a lot of hope. So maybe if you can also delve into it a little bit and see कि क्या बच्चों को अब सिखाना चाहिए या schools में या otherwise which is going to be of अफादियत in the future. What do you think is going to be important? That's a very complex question, but to begin with, I would say कि post normal times, like you're saying, कि हमें भी मालूम नहीं है कि आगे किस तरह चीज़ें pan out होंगी. I feel like इंसान को कभी भी मालूम नहीं होता ये, लेकिन एक पहले illusion था in which we sought a lot of security कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा. तब भी वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही pan out होगी. आई फील लाइक अब वो एक तरह की ब्लेसिंग है कि वो इल्यूजन भी आपसे ले लिया ले है लिया. कि अब आप उसके नीचे यू कैन हाइड बिहाइंड दैट कि मैं ये करूंगा माय डक्स आर इन अ रो और बस सब कुछ सेट है यू नो यू कैन नो लॉन्गर हाइड सो यू आर डेस्परेटली नीडिंग टू बी क्लियर इन योर इंटेंशंस. I feel like ये एक blessing भी है. The chaos in itself is a blessing because it forces you to find your own center. If there is एक stability हो ना तो आप अपना center भी भूले भाले रहते हैं. जब chaos में आप you thrown into the storm, you have to center yourself. You have to ground yourself. So I think ये एक opportunity है. Personally मुझे लगता है. लेकिन again तौफीक तो अब हमें उस chaos में react करने की तौफीक क्या होगी? That's something you know एक मुश्किल चीज़ है. उसको कैसे अट्रैक्ट करें, क्या सही चीज़ हो, क्या आई डोंट वांट टू मेक इट इन अ वेरी लाइक स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन ऑल्सो. लेकिन मुझे लगता है कि जो डिस्पोजिशन कमिंग बैक टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्पोजिशंस की बात है, मेरे लिए डिस्पोजिशंस ट्रांसलेट एज तौफीक टू बी ऑनेस्ट. Like what will you do at a given moment is your disposition. And I think that is tawfiq. How will you respond? It doesn't entirely depend on your education or your resources. It depends on what Allah subhanahu wa ta'ala enables you to do at that time. Right? So I think कि जो illusion ले लिया गया है stability का और ये post normal हो गया है, it can prove to be a blessing and it requires us to center ourselves in our intention, to focus, to minimize things. That's what I feel. एक तो ये I think आपका सवाल था. And I mean like I'm just thinking about like
what would you teach your own children? What would I teach my own Mano, child? like, what would you want them to now have, given that this illusion is no longer there? मतलब आप उन्हें क्या सिखाना चाहेंगी अब? I would honestly, as a mother, I would want at this point, I think, क्योंकि ये भी एक चीज बदलती रहती है. I want them to understand what is their role in it, right? Vis-a-vis other things. I don't want them to overextend or get overwhelmed or overperform or over anything. Just know कि आपका God given position kya hai? What is that position where you have been put and for what purpose? Mota mota, not in very detail. Intricate detail. I've completely kind of journeyed away from a lot of intricacies. Very big strokes में आप कहाँ हैं और क्यों हैं और आपने क्या मोटा सा purpose है, and that's it. That's how I would want my child to lead his life, not identify very closely with outcomes. Because they are fluid, they're changing, and outcome according to whom. And I don't want them to become so dizzy with these things, right? So grounding, मुझे लगता है मैं अपने बच्चे को सिखाऊं to center, to ground yourself in अपनी ज़ात के अंदर, अपने दीन के अंदर, अपनी आखिरत के अंदर. So that concept is essential even more now. Yeah, even more. Absolutely. So this was very intense, as intense as I think we expected it to be. And मुझे बार बार हमजा बस यही कह रहे थे कि तुम दोनों जब बात करोगी तो वो लोगों को क्या समझ आएगी? You're just talking, you'd just be so lost in your own isms and all of that. He's right. How is anyone going to benefit from this discussion? मैंने कहा चलो let's see. He has shown no faith in us. I had no faith whatsoever, and he was like, तुम्हारी बातें लोगों को नहीं समझ आती, तुम साथ माविश को भी ले आओ और फिर खत्म सारा कुछ. But I don't know, I just feel कि नहीं भी समझ आए तो it's still important to talk about these things. It's important, yeah. So, it's important. किसी को फायदा हो जाए या हमें अपने एटलीस्ट अपने थॉट्स के बारे में मजीद क्लैरिटी आए, डायरेक्शन मिले. So I think it was still a very this was very meaningful helpful for me. Thank you. conversation. Jazakallah khair. I really enjoyed it because again you have a very unique perspective. You're coming from a very different place, but we also share certain loves for certain things, but you're very different starkly in how you do things and how you think. So I kind of enjoy that part because there's a certain sharpness in what you have. जो मेरी उस चीज़ों में वो dull out हो जाती हैं. I'm like I overthink or. But yeah, this is great and alhamdulillah, I think कि ये थोड़ा off the beaten track होती हैं ये ऐसी बातें या कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि पेट भरे की बातें भी होती हैं, right? Because we have the privilege, so Allah ने एक आपको एक मौका दिया है where you could afford to think, develop your thinking, have certain things to say. So alhamdulillah, I think Allah का शुक्र ही अदा कर सकते हैं. Alhamdulillah. And I think वही है कि अगर I think it also kind of becomes your responsibility, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने सोचने का भी मौका दिया है तो क्यों दिया है to begin with. मतलब ऐसे कोई आपको खास you're not अल्लाह ताला's favorite कि आपको सोचने का मौका दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो उसके पीछे भी कोई टेस्ट है, कोई responsibility associated with it है कि आपको ये तौफीक भी दी गई to begin with. उसका भी जवाब देना उसका भी शायद जवाब तो देना है, क्यों नहीं देना? I think देना तो है. Well, that's my question to him कि इतना क्यों सोचने का मौका. Chale, thank you so much for coming, Mahwish. I had a great time, and inshallah, let's continue. I really enjoyed it. I hope, inshallah, we can continue. Inshallah. Assalamu alaikum.